Anh con sama, anh con. Eh, vậy rồi. Cái này là sau về nó được lại. Kenapa? Takwi? Nó thật tệ mà. Anak kamu? Nó thật tệ. Nó thật. I have been playing chess more than 1 year. My state level performance is very good. That last year I won 5 games out of 6 games and I became third. Hi, I'm Mukul Bhandari, and we have a small organization called Unmute Impact, through which we are teaching chess in rural parts of Meghalaya in a block called Pinursla. In the last 2.5 years, our small team of 3 members on ground have been teaching about 700 to 800 students and youth across Pinursla region. It has been heartwarming to see the way children grasped the game of chess, the way they showed talent for chess, the aptitude for chess. The children even transformed as they continued playing chess, they understood, and the way it brought discipline to their life. Parents also came up to us and they spoke about how children want to become something. When we know the chess, then I just play like that, just for fun, and now I want to be someone. I get the opportunity to play at national level. But just 2 days before the tournament, we were informed that John could not play the tournament because his birth certificate was received 1 year later or much after he was born. 85% of Meghalaya is rural, so they don't know much about documents. So generally people don't apply for the birth certificate right away, or they do not get in the hospital. So they later on, there's a procedure, established procedure, where they, before going to school or when they are getting admitted into school, they apply. दिसंबर में जब सिलेक्शन के लिए खेला था, तीनों बच्चा में से 2 बच्चा तो अच्छा रैंक आया था। एक आया फर्स्ट, अंडर 11 को फर्स्ट आया था, एक आया सेकंड आया था अंडर 13 को। So what's happening is that a rule which was meant to ensure fairness, because of that rule, genuine players are getting filtered out simply because of where and how someone is born. ये तो ठीक था, लेकिन जिसके मेडिकल टेस्ट के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा, तो जिसके हम लोग का खर्चा तो बहुत जाएगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, और रजिस्ट्रेशन एक प्लेयर का 5000 लगेगा, तो तीनों बच्चा का 15000 उसमें जा रहा है, और अलग से आने जाने का, उधर रहने का खर्चा बहुत होगा, इसलिए यही दिक्कत है। Other documents can be asked for proof of date of birth. Now Aadhaar is there, and the state is like mostly everyone has Aadhaar and other documents, Epic card, anything can be asked if you want. There are so many documents. We are not asking to change the rule. We are just saying that let's make the system more accessible. ये जो टेस्टिंग है ये रीजनली भी अवेलेबल होनी चाहिए। बच्चे मेडिकल टेस्ट भी अगर देना है तो अपने स्टेट में जाकर एक लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दे पाएँ, अफोर्डेबल भी हो पाए बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कॉस्ट और इतना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस देखकर ही बच्चे, क्योंकि उनको पता लग गया और बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है जो क्वालिफाई कर गए थे अब वो नहीं खेल पाए, और ये देखकर और बच्चे हु पिक्ड अप चेस एंड हु वर स्लोली इम्प्रूविंग,
उन्होंने भी अब आना छोड़ दिया कि भाई क्या फ़ायदा, मेरे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल बाद का रिसीव किया हुआ है और अब तो मैं भी नहीं खेल पाऊंगा. सो दिस कम्युनिटी विच वर सीइंग अ राइज इन चेस, एंड नॉट ओनली चेस, कम्युनिटी बिल्डिंग वॉज टेकिंग प्लेस, पर्सनैलिटीज़ वर ट्रांसफॉर्मिंग. बच्चे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने लग गए थे, अचानक से बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, इंसान ही बदल गए थे सारे. एंड नाउ फॉर देम टू सी कि आप वो चेस खेलना छोड़ रहे हैं, दिस इज़ हार्ट शैटरिंग.